Today we are going to start a new chapter in political science. This is chapter number 5 and it is called Contemporary South Asia. Okay, important chapter. It is about India and its neighbors. Let us first see what this term South Asia means. Asia, because it is a large continent, we sometimes use Western UP and Eastern UP because UP is a large state. Similarly for countries also, and because Asia is a big continent, we do not refer to just Asia because different part of Asia have got different kind of geography, different kind of their history, and here we are trying to learn about South Asia. The region which falls under this term South Asia, let us first look into that. Okay, what is South Asia? So the expression South Asia, here I have noted on the board to make it very clear. Now this is what South Asian countries are. If we combine all these countries, what we mean by South Asia is a group of these countries. So basically Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. This is the region. But when we refer to South Asia, even though these two countries may not fit into this definition, but their politics and the politics of these countries is relatively same. So when we talk about South Asia, we also include these two countries. We include Afghanistan and we include Myanmar. Okay. So these are the countries: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan and Myanmar. Or if I can simplify it, then it is India and its neighboring countries, which is called South Asia. Okay, we leave out China, even though China is part of this area, but because China is not considered a part of South Asia. Okay, even though it is our neighbor. Okay, now this area is obviously different and it is cut off from the other region, or we can say it is insulated from all sides. In the north we have got Himalayas, okay, and then we have these oceans. In the south we have got Indian Ocean, Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. So this region is kind of surrounded by these mountains and sea water. Okay. So the expression South Asia usually includes the following countries. They include Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. And if you can take the help of maps, okay, kindly look into atlases if you are not clear about any country. And there might be a map maybe in this chapter also, or at the back of this book there is a map. From there you can also see. Now we will be learning about each of these countries, what kind of politics and what kind of system of governance they have, and India के relationship in countries के साथ कैसे हैं. That is what the theme of this entire chapter is. So ये South Asian region के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. And इस चैप्टर में साउथ एशियन कंट्रीज, इन कंट्रीज के इंडिविजुअली हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है एंड ऑल्सो हमारे इंडिया के रिलेशंस इन कंट्री के साथ कैसे हैं. सो बेसिकली and the boundaries of the region are not as clear in the east and west as they are in the north and south. Afghanistan and Myanmar are often included in discussions of the region as a whole. China is an important player but is not considered to be part of this region. In this chapter we shall use South Asia to mean the above 7 countries. अब इस चैप्टर में जब भी वर्ड 7 साउथ एशिया आएगा तो उसका मतलब इन 7 कंट्रीज से होगा, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज से. The various countries in South Asia do not have the same kind of political system. पहला तो ये है जो मैं समझना है, ये जितने भी 7 कंट्रीज हैं लेकिन इन सब के यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम तो एक नहीं है. जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, बट ऑल दिस कंट्रीज डू नॉट हैव डेमोक्रेसी. So let us look into the detail कि किस कंट्री में क्या है. And we see that India and Sri Lanka, India became independent
independent in 1947, and the next year 1948 Sri Lanka became independent. Both were under the colonial rule of Britishers, and after Britishers left, both the countries they adopted democracy, and both the countries are still democracy. Here but I have written the word stable because this is the inception of democracy. जब से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है इन दोनों कंट्रीज में, अभी भी डेमोक्रेसी है, बीच में किसी तरह का कोई मिलिट्री रूल यहाँ पर नहीं हुआ है. ओके, so these two countries out of these 7 countries if you see, India and Sri Lanka they have had democracies and stable democracy. यहाँ पे शुरुआत से डेमोक्रेसी है, शुरुआत से मतलब when they became independent, colonial rule खत्म होने के बाद. पाकिस्तान एंड बांग्लादेश that is not the case. यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हुआ, बट देन बीच में दे हैव बीन लॉट ऑफ मिलिट्री कूज. पाकिस्तान में हम देखते हैं दे हैव बीन 3 मिलिट्री कूज. बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर रूल किया है. रिसेंटली पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट है, बट इससे पहले भी वहाँ पर मिलिट्री रूल्स हो चुके हैं, मिलिट्री कू हो चुका है. मिलिट्री हैज फोर्सफुली ऑब्वियसली टेकन द पावर इन देयर ओन हैंड्स. लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए एंड फाइनली वहाँ पर अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. बट द प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज दैट मिलिट्री इज स्टिल वेरी पावरफुल इन पाकिस्तान, एंड वो गवर्नमेंट चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है. सो इवन दो पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा कि हम इंडिया में देखने को हमें मिलता है. यहाँ पर केवल गवर्नमेंट मिलिट्री इज ऑल्सो समवॉट a part of government in Pakistan. Bangladesh they also have military coups and वहाँ पर भी stable democracy नहीं है. Okay, and Pakistan and Bangladesh have experienced both civilian and military rulers, with Bangladesh remaining a democracy in the post Cold War period. तो 1991 के बाद Cold War period के बाद बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है. Pakistan began the post-Cold War period with successive democratic governments. तो Cold War के बाद हम देखते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई. पहले बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, एंड देन इट वाज फॉलोड बाय नवाज शरीफ. दे वर द प्राइम मिनिस्टर्स, बट इनके बाद अगेन देयर वाज अ मिलिट्री कू, एंड बट इट सफर्ड अ मिलिट्री कू in 1999. It has been run by a civilian government again since 2008 के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सिविलियन रूल है. एंड परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मिलिट्री कू हुआ था, पावर अपने हाथ में ले दिया था, बट 2008 के बाद ही वॉज आउट ऑफ पावर एंड वहाँ पे इलेक्शंस हुए एंड तब से वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी है वहाँ पर पाकिस्तान में. बट एज आई टोल्ड यू मिलिट्री इज स्टिल वेरी पावरफुल. अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल ओबियसली वहाँ पर भी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. नेपाल वॉज अ मोनार्की, तो वहाँ पे राजा महाराजाओं का रूल था, मोनार्की था नेपाल. एंड देन नेपाल बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो किंग ने अपने पावर्स दे दिए एंड देन वहाँ पे पार्लियामेंट बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, पार्लियामेंट बना एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई. सो नेपाल बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. Then again powers were taken away from the parliament वगैरह को हटा दिया गया, again it became a monarchy. Finally monarchy has been abolished. monarchy वहाँ पर नहीं है नेपाल में, and till 2006 Nepal was constitutional monarchy, and till 2006 Nepal was a monarchy, but now it has become a republic. In 2008 the monarchy was abolished. What is important that you remember अभी जो प्रेजेंट में है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड अब वहाँ पर monarchy नहीं है and monarchy has been abolished. And 2008 के बाद the monarchy was abolished and Nepal emerged as a democratic republic. ब्रिटेन में monarchy कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy है, बट नेपाल में monarch को हटाना इसलिए ज़रूरी हो गया बिकॉज बीच में monarch ने he tried to take the power और डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की. इनफैक्ट ख़त्म कर दिया था उन्होंने. पार्लियामेंट वर अबॉलिश्ड एंड ऑल दी पार्टीज दे वर बैड, सो दे हैड टू फाइट फॉर देयर डेमोक्रेटिक राइट्स. वहाँ पे दोबारा से नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, दोबारा से डेमोक्रेसी आई एंड फाइनली दे डिसाइडेड कि बिकॉज मोनार्की इज डेंजरस, ये दोबारा से इस तरह का हो सकता है, इसीलिए दे हैव अबॉलिश्ड मोनार्की वंस एंड फॉर ऑल. मोनार्की टोटली
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, जैसा कि हमारा है इंडिया है. ओके. Now next country, let us look into Bhutan. Bhutan has now become a constitutional monarchy in 2008. Okay, so similar changes are taking place in two smallest countries of the region. Bhutan obviously अब वो constitutional monarchy है 2008 के बाद. उससे पहले it was an absolute monarchy. All the powers were with the king. Now the king does not have all the powers. There is a representative government and वो government वहाँ पर obviously काम कर रही है. And Bhutan is now a constitutional monarchy. Parliament है and monarch भी है. Maldives ये आइलैंड नेशन है, अरेबियन सी में छोटी सी कंट्री है. ये सल्तनत था till 1968. And after that we see that in June 2005 the Parliament of the Maldives voted unanimously to introduce a multi-party system. मालदीव्स में अब मल्टी पार्टी सिस्टम है. वहाँ पर कई पार्टीज अब कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. एंड मालदीव्स इज नाउ मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पर फॉलो होता है. सो व्हाट वी आर सीइंग इज दीज आर डिफरेंट कंट्रीज. ओके, सब आसपास ही हैं, सब नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, बट द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज डिफरेंट and there is no uniform system of governance. जैसे कि यूरोप में हमें देखने को मिलता है कि most of the countries they are democratic countries. That is not the case here. यहाँ पर डेमोक्रेसी obviously की शुरुआत हुई है. In some countries it is very stable. In some countries we cannot say that it's a permanently a democratic country. With Bangladesh and Pakistan and Myanmar we can never say. Myanmar again we see that democracy वहाँ पर नहीं रही है. So these countries they keep fluctuating. Nepal from monarchy to constitutional monarchy and then finally republic. So hopefully नेपाल में जो सिस्टम है monarchy वगैरह खत्म हो गया है तो they have become a republic. But whether the same system will last, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कहना मुश्किल है. As far as India and Sri Lanka are concerned, then we have that democratic system of governance and यहाँ पर democracy बाकी कंट्रीज के मुकाबले स्टेबल है और इट हैज़ बीन देयर सिंस दीज कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट. वी हैव नॉट डिस्कस्ड दीज टू कंट्रीज. अफगानिस्तान अगेन दे हैव अ प्रॉब्लम. समटाइम्स तालिबान कम्स टू पावर, समटाइम्स देयर इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट स्टिल इन फैक्ट अफगानिस्तान एज अ कंट्री दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अफगानिस्तान में अभी वो प्रिमिटिव स्टेज पर है. They obviously sometimes they start following Sharia. तालिबान अपने पुराने लॉज के हिसाब से कभी रूल करने लगते हैं. तो अफगानिस्तान इज नॉट अ वेरी स्टेबल कंट्री. ओके, नाउ लेट अस सी यहाँ रीजन में डेमोक्रेसी है या नहीं है. लेट्स कीप दैट असाइड एंड लेट्स कम इनटू न्यू एरिया ऑफ डिस्कशन. यहाँ पर सर्वे वाज डन and the people of these countries they were asked what do they prefer. Democracy है या नहीं है, but what do they prefer? Do they want democracy or they do not want democracy? You will see on page number 67 there is obviously a graph है वहाँ पर and it shows South Asian countries के बारे में है ये. And 3 questions were asked. डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट इन पाकिस्तान. एक कंक्लूजन है. यहाँ पर पूछा गया कंट्री से दैट डेमोक्रेसी इज प्रिफरेबल और नॉट. क्या आपको डेमोक्रेसी पसंद है और जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप चाहते हैं, आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं, आप मिलिट्री रूल चाहते हैं, आप वन पार्टी रूल चाहते हैं या फिर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं. So question was democracy versus other forms of government. Whether you prefer democracy over other forms of government, जो बाकी तरीके हैं रूल करने के वो पसंद है या फिर आपको डेमोक्रेसी ज़्यादा पसंद है. ये क्वेश्चन जो पूछा गया. Then 69% of the Bangladesh people they said that they prefer democracy. सिस्टम कोई भी हो वहाँ पर, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं कि पब्लिक क्या प्रेफर करती है. सो वी सी दैट 69% ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश
obviously they prefer democracy. 70% of India. ये सर्वे थोड़ा पुराना भी है and there is a date and it says both these graphs are based on interviews with more than 1900 ordinary citizens in the 5 countries of South Asia. तो ये 1900 लोगों से पूछा गया और ये 1900 कंट्रीज ये जो लोग थे ये इन 5 कंट्रीज के थे और ये 5 कंट्रीज कौन से थे? ये थे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। इन 5 देशों के 90,000 लोगों से पूछा गया तब उनके जो जवाब थे उनके बेसिस पर यहाँ पर ये कंक्लूजन है। और ये स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, न्यू दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007। तो ये बेसिकली 2007 के फिगर है एंड 2007 के फिगर के हिसाब से इसलिए थोड़ा सा पुराना है ये। बट बांग्लादेश 69% ऑफ बांग्लादेशीज दे प्रेफर डेमोक्रेसी, 70% ऑफ इंडियंस दे प्रेफर डेमोक्रेसी, 62% ऑफ नेपाल दे प्रेफर डेमोक्रेसी, 71% of Sri Lankans they prefer democracy, but the amazing result is that of Pakistan. Only 37% people in Pakistan they said कि हमें democracy चाहिए. So what do they want? They are not very sure about it. The second question they were asked is whether you prefer dictatorship. Then sometimes dictatorship is better. The second was कि क्या dictatorship एक अच्छी चीज़ है? Then 6% of Bangladeshis they said yes, dictatorship is sometimes better. 9% of Indians also said that dictatorship India को शायद ज़रूरत है, कभी भी होना चाहिए. Nepal 10% of people, Pakistan 14%, and the maximum percentage Pakistan का 14% said they're happy with dictatorship. Okay, 11% of Sri Lankans also said that dictatorship is good for them. But some people doesn't matter dictatorship हो, democracy हो, whatever monarchy, they have no problem. So the third is it doesn't matter to me. यहाँ लोगों को फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का यहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। 25% ऑफ बांग्लादेशी they said it does not affect us, मतलब उन्हें उनके लाइफ पर उन्हें लगता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई डिक्टेटर रूल करे, कोई मिलिट्री रूलर हो या फिर डेमोक्रेसी हो। हम बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इस एरिया में किन कंट्रीज के लोगों को पसंद है या नहीं है। So some people, 25% of the Bangladeshis they say that it doesn't matter to us, and 21% in India they have said that it doesn't matter to them whether India has got democracy or not. 28% of Nepal they say that it doesn't matter to them. 49%, almost 50% of Pakistan, आधा पाकिस्तान को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वहाँ पर मिलिट्री रूल हो या फिर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो। ओके, और ये सर्वे का भी टाइम डिपेंड करता है। अभी जैसे पाकिस्तान में हालात हैं वहाँ पर अगर अभी ये सर्वे किया जाए तो कुछ और रिजल्ट आएगा। इंडिया में आप ऑब्वियसली सर्वे अगर ये किया जाए तो ऑब्वियसली द फिगर्स विल बी डिफरेंट। सो डिपेंड करता है फिगर्स का। तो फर्स्टली दिस फिगर्स आर a bit old, 2007 के, but yes they are indicated। इससे हमें पता चलता है कि लोग क्या प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं डेमोक्रेसी। ओके, 18% of Sri Lankans also say it doesn't matter to them। ओके, so how suitable is democracy for a country? कितने लोग अपने कंट्री में डेमोक्रेसी चाहते हैं? So बांग्लादेश में obviously 93% देश से उन्हें डेमोक्रेसी सूट करती है। श्रीलंका में 92%, इंडिया में 92%, पाकिस्तान 84%। हाउ सुटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर ए कंट्री? तो ये एक और ग्राफ है। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस कंट्रीज, यहाँ पे डेमोक्रेसी ऑब्वियसली लोगों को चाहिए तो, एंड दे प्रेफर डेमोक्रेसी over other forms of government. Despite the mixed record of the democratic experience, the people in these countries share the aspiration for democracy. लोग चाहते हैं इस रीजन के कि डेमोक्रेसी हो। और recent survey of the attitudes of the people in the 5 big countries, ये उसी सर्वे की बात हो रही है, and
showed that there is widespread support for democracy in all these countries. They prefer democracy over any other form of government and think that democracy is suitable for their country. उन्हें लगता है कि उनके देश के लिए डेमोक्रेसी सही रहेगी और ये डेमोक्रेसी उनके लिए अच्छी बात है. Now we are comparing different data of these countries. हम इनके डेवलपमेंट स्टेज की बात करेंगे कि कौन कितना डेवलप्ड है. इसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वी हैव डिस्कस्ड दिस टर्म्स. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, अडल्ट लिटरेसी, इनरोलमेंट रेशियो, ये जो नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, वो रेशियो देखेंगे किस कंट्री में कितना है. जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी कितनी है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दैट ऑल्सो यू अंडरस्टैंड. टीबी केसेस, नाउ हेल्थ का एक और इंडिकेटर लिया है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. हाउ मेनी पीपल सफर फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस. एंड पॉपुलेशन लिविंग बिलो इनकम पॉवर्टी लाइन, कितने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, इनको देखा गया है. बट ये गरीबी रेखा वो नहीं है जो इंडिया की है. दिस पॉवर्टी लाइन इज इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन. इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है, दैट इज इफ एनी पर्सन is not earning $1.9 a day, that means he is below poverty line. $1.9 so you can convert it into Indian rupees. So if nearly 70 rupees in $1, so around 130, 120 rupees. If somebody is not earning in one day, that means he is below poverty line, which in a month will somewhere come to 4,200 rupees per month. तो अगर इतनी इनकम किसी की नहीं है इंडिया में, then he will fall below poverty line according to the international poverty line. Okay. तो यहाँ पे वर्ल्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के पहले फिगर दिए गए. अगर पूरा वर्ल्ड का हम देखें, then life expectancy is 72 years, 72.2. तो ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया के अगर हम देखें फिगर, तो ये 72 ईयर्स तक लोग जिंदा रहते हैं. तो 72 ईयर्स, ये 2017 के फिगर्स हैं. डेवलपिंग कंट्रीज में ये फिगर थोड़ा कम हो जाता है एंड इट कम्स डाउन टू 70 ईयर्स. साउथ एशिया इन 7 कंट्रीज का कंबाइंड हम ले, देन इट कम्स टू 69%. नाउ टेकिंग इट इंडिविजुअली, बांग्लादेश 72 years, sorry, maybe I use the word percent, it's not percent, it's years. So 69 years South Asia, Bangladesh 72 years. Please look into the figures on page number 67, because I told you not everything can be put on the board. So I am reading this from your chapter and page number 67. Okay. So Bangladesh 72 years, India 68. So we are below the world average. लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम वर्ल्ड एवरेज से नीचे हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज की एवरेज से नीचे हैं, हम साउथ एशियन कंट्रीज की एवरेज से भी कम हैं. क्योंकि वर्ल्ड की एवरेज है 72 ईयर्स, डेवलपिंग कंट्रीज की एवरेज है 70.7 विच विल बी 71%, साउथ एशिया की एवरेज है 69% एंड वी आर एट 68.8%. सो वी आर बिलो द एवरेज ऑफ वर्ल्ड, below the average of developing countries, below the average of South Asia. Bangladesh के फिगर्स हमसे बेटर है, they are at 72 years. Nepal 70 years. Pakistan, obviously not a very good sign, it is 66 years. So Pakistan का हमसे कम जरूर है. Sri Lanka 75 years. So the only country in South Asia जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे कम है वो पाकिस्तान है. रेस्ट ऑल कंट्रीज हैव अ बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके. अगर लिटरेसी की बात करें, तो वर्ल्ड की लिटरेसी जो रेट है दैट इज 82%. डेवलपिंग कंट्रीज में लिटरेसी रेट इज 81%. साउथ एशिया की लिटरेसी रेट कम्स डाउन टू 68.7%. बांग्लादेश 72%, इंडिया 69%, नेपाल 59%, Pakistan 57, Sri Lanka 91. So we see that Nepal and Pakistan
उनका काफ़ी कम है 59 and 57, but India is also not very good, it's only 69. Whatever these figures that we are getting to see in India, it is because of the large population. जब हम इतनी population से फिगर लेते हैं तो फिर फिगर्स ऑब्वियसली उतने सही नहीं हो सकते। हम यहाँ पे इनरोलमेंट की बात कर रहे हैं कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वर्ल्ड में we see 79% of the children they attend school, 75% of the people of the children they attend school in developing countries. South Asia में obviously it is 71%, Bangladesh 69%. India का education record is better, we are at 75, so 75% of people of children are enrolled, वो स्कूल जाते हैं बच्चे। नेपाल में 71%, Pakistan 46% only, and Sri Lanka 98%. So Sri Lanka has got a very good record as far as literacy is concerned. Then there are other figures which I think I'll discuss in the next class. There are a lot of figures, you might get confused. So we are starting a new chapter, and this is about South Asia. We understood what South Asia is and the type of governments that are there. इसमें timeline भी दी गई है. You can go through that timeline on page number 68 of South Asia. यहाँ पर इन countries की different dates दी गई हैं कि कब कौन सी डेट पर कोई important चीज़ हुई है इन countries में. Then we will be discussing country by country. We will be discussing Pakistan, we will be discussing Bangladesh, we will be discussing these countries that have been mentioned in South Asia. उनको individually देखेंगे, and then finally we will try and find out India's relationship with these countries. So thank you. That's all in this class.